the GDP of New Zealand is divided in amongst 5 million people, and the GDP of Pakistan is divided amongst 230 million people. We are giving birth to a New Zealand every year. Population crisis is the biggest issue in Pakistan, which is linked to education, which is linked to economic prosperity, which is linked to everything. हर चीज़ का रूट कॉज पॉपुलेशन पे जाके खड़ा होता है. जिस चीज़ को भी हम टच करते हैं और इसकी 4 साल की प्लानिंग करते हैं तो वो 4 साल की सारी प्लानिंग ख़राब हो जाती है, बिकॉज पॉपुलेशन हमने साथ प्लान ही नहीं की हुई होती उसकी. वो जिस स्पीड से बढ़ रही है तो कभी भी आप वो इट्स समथिंग दैट आप कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे इस सिचुएशन को. We have not yet been able to persuade political leaders to speak about family planning publicly, about population growth. They still suffer from this terrible misconception that this is not a subject that the people would like to hear us talk about, जो कि बिल्कुल एक गलत फहमी पर मबनी है. ये हमारा परसेप्शन ज़्यादा है कि जी हम मजहबी मुल्क हैं, हम इस्लामी मुल्क हैं और इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि बच्चा आप रोकने की कोशिश करें. ये सब गलत है. Out of every 10 married couples in Pakistan, only 3.5, let us say, use contraceptives. Turkey, Iran, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, the rate of usage is 7 to 8 married couples use contraceptives. In Pakistan, however, 4 more married couples, particularly low income and middle income, want to practice family planning, but they don't know how to, or they are very afraid of it, or they are completely ignorant of it, and therefore they do not practice family planning. हमारा नेशनल नैरेटिव जो अभी पाकिस्तान का है, which is very recently been developed, that focuses on 3 pillars. One is rights, one is responsibility, and the other one is balance. We turn to the Quran, and Surah Al-Rahman is so beautiful in expressing the concept of balance, that nature itself is all about this delicate balance between one species and another species, all interlocked with each other. And wherever that balance is upset, then the whole rhythm and pattern of life can be affected. Balance between the resources that you have as a couple, balance between the resources that you have as a family, balance between the resources that you have as a society, आपका मोहल्ला, आपका शहर, and then आपका country. सारे resources को manage करके चलना है. And lo and behold, the Quran is so wise that it advises a woman to be a mother to be able to breastfeed the child. Now when that is done, it automatically means birth spacing. 2 साल कम से कम वक्फा होना चाहिए एक बच्चे और दूसरे बच्चे के दरमियान. सालों डेकेड्स से औरतों के ऊपर काम किया जा रहा है ऑन फैमिली प्लानिंग. प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, सबके ऊपर काम किया जा रहा है. बट हम फिर भी 240-250 मिलियन की पॉपुलेशन है. समथिंग्स नॉट राइट. हम जैसे मर्द बदमाश हम चाहेंगे कि जी हम फैसला करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हों. आप कौन होते हैं बोलने वाले? Men was never a part of the program focus in that sense. कपल काउंसलिंग की बात ज़रूर होती थी, लेकिन वो कपल काउंसलिंग हमारे यूजुअली इतनी प्रैक्टिस हुई नहीं. विमेन के ऊपर इंटरवेंशंस हो रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं विमेन के ऊपर. मेन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा. नो वंस ब्रिंगिंग मेन इनटू दिस कॉन्वर्सेशन, एंड वी एट PSI Pakistan feel that if we want to bring in a change, then we have to bring in men on the table as well. We have to make men start talking about this with their partners and start looking at this as a health issue and as an economic issue
and as a overall prosperity of their family का issue. When we spoke to men and we said, where do you get information? Who do you talk to when you want to talk about and get information around family planning? What we learned from them was कि जी general problems होते हैं तो हम अपने fathers के पास चले जाते हैं, we go to our brothers, we go to our friends, those are our source. चचा के पास चले गए, that's our source who we take information from. But when we asked them, who do you go to get information about family planning, they said, we don't go to anyone. And we said, why? They said, because this is about our wives. This is about our partner. How can we go and talk about such a private topic with another male who knows us and probably knows our wife as well? So they don't talk to them about it. We said, do you go to any doctors? Do you go and speak to any providers, clinics में कहीं जा करके? तो they said, नहीं, वहाँ तो most of these doctors who provide this information are आपकी female doctors. एंड वहाँ तो हमें बहुत लेवल ऑफ जजमेंट फील होती है, मेल ईगो है ना, तो थोड़ी सी बुरा फील करती है कि हमें एक डॉक्टर बैठ के बता रही है, क्योंकि वो सही समझा रही होती होंगी बहुत केसेस में, तो वो नहीं कर सकते. हमने कहा जी अच्छा फार्मेसीज़ पे जा करके, नहीं जी फार्मेसी तो हम इस्तेमाल ही वो करते हैं जो हमारे मोहल्ले से बहुत दूर हो. जो रेगुलर फार्मेसी है वहाँ से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं यूज़ लिए जाते, वहाँ से आप कॉन्डम्स नहीं खरीदते. हम फार्मेसी कॉन्डम के लिए वो वाली इस्तेमाल करते हैं जो किसी और मोहल्ले में होती है, because we don't want them to know that we are using this. So इतनी level of shyness है, और shame है. We have come up with VIA, which is a platform that is going to provide information to men, women, boys and girls anonymously in a journey, walk through a journey the way they want to walk through it. It will give them information that is vetted, that is been adapted for a layman to understand. And then it will also, obviously we want to connect these individuals who reach out to speak to a doctor as well, get their perspective also, so that अगर आपको कोई चीज़ medically approve करवानी है तो आप वही जा करके Google doctor ना बन जाएं. And then if you want to buy a product, in that case, click of a button, you go to a e-commerce, e-pharmacy, you buy a product as well. इस तरह की अगर हम एक frictionless journey एक couple को दे दें, so we believe that interspousal communication in this area will increase, and people will be able to make healthier decisions much faster in a private setting. %70 of the people who are using our chatbot are using it in Urdu, not in English, in Urdu. एंड आपको पता है कि उर्दू रीड करना इतना आसान नहीं है ऑन अ फ़ोन, बट वो कंफर्टेबल फिर भी उर्दू में कर रहे हैं, फील कर रहे हैं. एवरेज टाइम जो वो स्पेंड कर रहे हैं वो इंडस्ट्री एवरेज टाइम से बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, जिसको हम अगर ट्रांसलेट करें हमारे कितने टॉपिक्स वो पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 टॉपिक्स वो प्रॉपरली पढ़ रहे हैं उस टाइम के हिसाब से. सो आई थिंक बिहेवियर चेंज हो तो सकता है, वो मुश्किल नहीं है. persistence की ज़रूरत है. You have to be resilient and you have to be persistent. अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सैनिटरी नैपकिन्स की, आज से 20-25 साल पहले जब सैनिटरी नैपकिन्स पाकिस्तान में आए थे, इट वाज सच अ टैबू टॉपिक, राइट? बिलबोर्ड जला दिए गए थे, लोगों ने कहा कि जी अब पाकिस्तान में ये होगा कि सैनिटरी नैपकिन के बिलबोर्ड्स होंगे. जब टीवी पे आया पहली बार सैनिटरी नैपकिन का कि जी अब बाप बेटी बैठ के ये चीज़ें देखेंगे, आज हम ब्लिंक भी नहीं करते जब बाप बेटी बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और उसमें सैनिटरी नैपकिन के ऐड आता है. इस दौर में एडवर्टाइजर्स और टीवी चैनल्स या मीडिया के मालिकान फैसला करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितनी देर तक दिखाया जाएगा, कब दिखाया जाएगा, क्या उसका मतन होगा.
हमें बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है कभी कभी कि आप डिजिटल से क्या चेंज ले आएंगे, ये तो अर्बन इलाकों में है, ये तो रूरल इलाकों में है ही नहीं। मेरा रिस्पॉन्स उनको हमेशा ये होता है कि पहली बात तो ये कि जो हमारे जो इशू है, पॉपुलेशन का इशू है, वो अर्बन और रूरल में एक जैसा है। आप बेशक फैसला खुद ही आप करें कि तादाद क्या होनी चाहिए बच्चों की, लेकिन याद रखें कि तवाज़ुन हो, आपकी काबिलियत में आमदनी क्या है आपकी, और आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी बनती है उन बच्चों को तालीम और सेहत और रोज़गार और उनके मुस्तक़बिल के लिए।